Hello everyone, my name is Arghadeep and welcome to another finance video. In this channel, we discuss everything about trading from stocks to crypto to index to future, each and everything. So make sure you subscribe to this channel so that you don't miss out on the amazing trading related content we upload every week in this channel. So let's start today's video. आज हम सीखेंगे What is morning star? ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, a very famous कैंडलस्टिक पैटर्न a lot of trader use is morning star. तो ये morning star आखिर है क्या? देखिए एक चीज एकदम क्लियर कर लो आप. Morning star pattern represents bullishness. Morning star pattern bullishness को represent करते हैं. अगर आप morning star pattern देखोगे, you will try to take a bullish trade. अगर आपको सही एंट्री मिलेगा, तो you will take a long trade. You will not go short and bet against the market. Never bet against the market. Market will absolutely destroy you if you go against the market. So I hope you can see my iPad screen now. So let's start. देखिए, morning star means bullishness. When we see a morning star pattern, we will take long trades, right? If we get good entry and risk management. So, in theory, a morning star pattern is comprised of 3 candles. So, in theory, let me repeat again. In theory, in textbook conditions, in ideal situation, a morning star pattern looks like this. A strong bearish candle, a doji-like candle here, a doji-like candle here, and then a strong green candle like this. In theory, देखिए, you have to understand the psychology behind it. What is the psychology behind it? The shape, ये history lesson नहीं है. Trading is not history कि आप memorize कर लिया हो गया. You have to understand the psychology. So what is the psychology behind it? The psychology behind this is, see, in this situation, bears were powerful, right? Bears were powerful. Here, तो bears ने market को, यहाँ पे price था, यहाँ पे opening price था, यहाँ पे close, तो bears ने price को नीचे push कर दिया. The bears pushed the price down. Then, the bears, in this situation, the bears failed to sustain. The bears failed to sustain. Why? See, doji का मतलब क्या है? Doji मतलब uncertainty, right? Doji, a doji represents uncertainty. When can we say there is an uncertainty in the market? Where we cannot determine कि यार market में bears ज़्यादा powerful है या फिर bulls, right? तो यहाँ पे bears ने market को नीचे गिरा है, उसके बाद ही एक doji form हो. मतलब now we are not sure that the bears are in the control of the market. So the bulls have equated the powers to the bear. There is an uncertainty. And the next candle we see, okay, and in the next candle we see that bulls are more powerful than bears. Bulls are more powerful than bears. This is the psychology behind morning star. This is the most important thing about a morning star. Pattern memorize करके क्या करोगे आप? This is the most important part. देखिए, morning star में ये होता है, bears ने market को नीचे गिरा है, price को नीचे गिरा. फिर, at this situation, the bears are in control of the market. Then as soon as the price move down, in the next candle, we see a formation of a doji. मतलब now the bulls have equaled the powers to the bears, but we still don't know for sure कि bulls ज़्यादा powerful है या bears ज़्यादा powerful है. So we wait for the next candle to form. And in the next candle, the bulls push the price up. The bulls push the price up. And in ideal situation, in ideal morning star, the closing of the bullish candle is above the opening of the first bearish candle. तो ये represent क्या करते हैं? Bears ने जो price को जहाँ पे नीचे गिरा है, bulls ने price को उससे भी ऊपर आके वो bear का जो price down है, bear के वजह से जो price down उसको recover कर. तो अब हम long trade ले सकते. This is morning star. But why I am mentioning ideal condition? Because in real market, in practical market, there can be two dojis. There can be two bullish candles. एक ही candle इतना बड़ा नहीं हो सकता. Maybe two small candles, one here and one here. दोनों मिलके bear को overcome किया. There can be two dojis. Instead of 3 candles forming a morning star, there can be 4 candles forming a morning star. So that's why I am focusing on making sure that you understand the psychology. Because if you understand the psychology, अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आता है एक मॉर्निंग स्टार का,
तो ये 2 कैंडल से बना है, 3 से, 4 से, 5 से, वो फर्क नहीं पड़ेगा। आप साइकोलॉजी समझ में, आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाए। तो चलिए अब 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं फ्रॉम निफ्टी 50, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल चार्ट में कैसे दिखता है मॉर्निंग स्टार। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, बुलिशनेस। तो आप बुलिश एंट्री कब लोगे, जब वो एक सपोर्ट लेवल पे आएगा, सपोर्ट लेवल पे मॉर्निंग स्टार हुआ तब आप एंट्री लोगे। रेजिस्टेंस में जब तक मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है, टोटल पैटर्न, जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करोगे, यू विल नॉट टेक अ ट्रेड। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सो यू विल टेक अ ट्रेड यूजिंग मॉर्निंग स्टार व्हेन इट इज नियर अ सपोर्ट जोन और इफ इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस। मेक श्योर ये 2 एंट्री आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, सी यहां पे एक सपोर्ट है, ठीक है। देखिए प्राइस बियर्स ने इसको प्राइस को नीचे गिरा है, ये जो कैंडल है देखिए यहाँ पे नीचे गया, बट ये सपोर्ट जोन में आके एक डोजी फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम दिस की इन दिस सिचुएशन द बियर्स वर कंट्रोल ऑफ द मार्केट, वर इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट, बट द बुल्स हैव इक्वल द पावर्स टू द बियर्स and then after this candle they completely move the price up even above the opening price of the bearish candle। अब उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया। देखिए यहाँ पे एक और मॉर्निंग स्टार है, देखिए प्राइस को नीचे गिराया, एक डोजी फॉर्म हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल ने ये दोनों कैंडल को फुल ओवरकम कर दिया। ये सिर्फ एक बुलिश, एक इनगल्फिंग कैंडल भी है। इनगल्फिंग कैंडल मींस पावर। तो मार्केट शॉर्ट अप। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। सी लुक एट दिस, लुक एट दिस। बियर्स ने प्राइस को नीचे गिराया, ठीक है। इस कैंडल के बाद एक सपोर्ट जोन में एक डोजी हुआ, राइट। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ने ये दोनों कैंडल का मूवमेंट को फुल ओवरकम कर दिया, प्राइस शॉर्ट अप। सो हाउ विल यू ट्रेड दिस इफ यू कंसीडर दिस? सो यू विल हियर आफ्टर द क्लोज ऑफ दिस कैंडल यू विल एंटर योर ट्रेड। स्टॉप लॉस रखिए below the support zone and keep a target of 1:2. See, target hit. So guys, this is how you should trade morning star. This is why you should understand the psychology of morning star. I hope I was able to make you guys understand कि ये morning star का जो पैटर्न है, theoretical pattern, वो मैटर नहीं करता, psychology behind that pattern matters. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, please like and subscribe to FIINANCE. Share this video with your friends so that उनका भी हेल्थ, उनका भी ट्रेडिंग इंप्रूव हो। See you guys in the next video. Until then,